हम सभी जानते हैं कि मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता, जिसके बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बाबा हम बच्चों को मूल्यों से भरपूर रोज करते आ रहे हैं और इसको आगे लेकर के कैसे हम एकेडमिक में इसको स्टार्ट करें, कि वैल्यू एजुकेशन जैसे शुरुआत किए आने वाली यूनिवर्सिटी के साथ। आज की डेट पे देखा जाए तो हम 26 यूनिवर्सिटी के साथ हमारे MOU हुआ है। ये अत्यंत हर्ष की बात है, खुशी की बात है। करम करावन हर बाबा ऊपर बैठ के हम बच्चों के द्वारा ये सेवाएं कराते रहते हैं। हम निमित्त हम बच्चों को भले ही बनाए हैं, लेकिन ऊपर बाबा बैठ के ही सारा कुछ करवा रहे हैं। तो सबके अंदर ये था कि कैसे हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाकर के, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर के सेवा करें। इसी रीति से जब शुरू हुआ वैल्यू एजुकेशन, पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से शुरू हुआ और उसके बाद मास्टर डिग्री वैल्यू एजुकेशन हुआ। उसके बाद हम जैसे कि MBA इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट वो भी शुरू किया। फिर काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, योगा एंड वैल्यू एजुकेशन, ऐसे कई सारे कोर्सेस स्टार्ट हुआ। तो आज 13 साल हो गया। कम से कम 20-20,000 से ऊपर ज्यादा स्टूडेंट इस कोर्स में लाभान्वित हुए हैं और डिग्री लिए हैं। और सबका मन में ये संकल्प रहा कि हम PhD कैसे करेंगे। मास्टर डिग्री तो ले लिए, लेकिन हमें PhD करनी है। तो सबका संकल्प जो था, तो बाबा तो ऊपर बैठ के उसको पूरा करते ही हैं। तो उसी रीति रिसेंटली हमारा मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा जॉइंट पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारा जो भी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है वो MOU हुआ है, तो उसका अवधि 5 इयर्स का रहता है, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये हमारा पार्टनरशिप में ये मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन विंग IIF से ये हमारा चल रहा है। अभी शुरुआत है। तो आप सभी यहाँ PhD के लिए जो रिसर्च सुपरवाइजर्स की जरूरत है, उसके आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी का भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हमारे बीच हमारे वरिष्ठ जो आप सभी जानते हैं, आदरणीय सिलू दीदी जी, उनका आप अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। दीदी लगभग से 48 ईयर्स से समर्पित रूप से यहाँ मधुबन में ज्यादा हो गए, 50 ईयर्स हो गए, तो 53 सॉरी जी, तो समर्पित रूप से दीदी 53 ईयर से सेवाएं दे रहे हैं। तो ये वरदान है कि दीदी को बाबा ने उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। ये खुद बाप दादा ने उनको ये वरदान दिया। तो ऐसे दीदी हमारे सम्मुख हैं, उनको हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि कई लोग किस्मत से मिलते हैं और वो दुआ बन जाती है, और कई लोग दुआओं से मिलते हैं और जिनके मिलने से हमारी किस्मत बदल जाती है। तो ऐसे दीदी हमारे सम्मुख बीच हैं और प्रस्तुत अभी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तो जिनकी सुबह परमात्मा की याद से शुरू होती है और जिनकी रात परमात्मा की सेवाओं से पूरी होती है। तो ऐसी हमारी दीदी को पा करके हम बहुत खुश हैं और दीदी से वरदान भी लेंगे, दीदी से बहुत कुछ सुनेंगे। तो दीदी का फिर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आदरणीय जय कुमार भाई जी हैं, उनको आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो समर्पित रूप से तमिलनाडु में बहुत मदुरई में रह करके बहुत सारे सेंटर्स, सब सेंटर्स खोलने के निमित्त बने हैं। और जब ये मुझे भाई जी के जो भी डायरेक्शन को हो, तो उसको मतलब वहाँ पे उस सेवा को ये बीच बीच में वो भी सेवा करते हैं वहाँ जाके, लेकिन यहाँ भी समर्पित रूप से शांतिवन में वो 2006 से लेकर के समर्पित रूप से यहाँ से 6 या 12
सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी का भी हम तहे दिल से स्वागत। मणि भाई जी हैं जो डायरेक्टर ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के हैं। आप अच्छी तरह से सबको भली भांति जानते हैं और उन्होंने भी अपना क्या कहे भाई साहब के बारे में, कितना बड़ा उनका बहुत सारे डिग्रीज लिए हुए हैं। तो उनको दिल में ये रहता है कि जब तक बाबा के बच्चे हैं, बाबा तो ऐसे कहते जब तक जीना है पढ़ते रहना है। तो भाई साहब के दिल में ये उमंग है कि जब तक जीना है डिग्रियां लेते रहते हैं। तो हर साल भाई साहब नई नई डिग्रियां लेते रहते हैं और आज कई हिंदी का भी कोर्स कर रहे हैं, एमए ले रहे हैं, तो कई दूसरे कोर्सेज में लगे हुए हैं। तो उनका दिन भर ये रहता है क्योंकि जब तक जितना हम इनपुट भरेंगे उतना ही हमारे अंदर वो आउटपुट निकलेगी। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं सिटीज में जितना हम कहते हैं 26 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा मोई हुआ है। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी और ये पांड्यामणि भाई जी का मेहनत कहो श्रेय कहो, इसके आधार से ये फलीभूत हुई है। और इस तो हमारे बीच अभी शिविका बेन जी पधारे हुए हैं, उनको भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं बहन जी लगभग 12 साल से समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं दे रही हैं और अच्छी रीति से बहुत एक्टिवली एजुकेशन विंग के जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से वो बहुत खूबी से वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं और सबको हमको ये पता है। और ये हमारे एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी भाई साहब पहुंचे नहीं है तो इसलिए उनका हम वेट कर रहे थे। उसके बाद आगे के लिए हम ये हम तहे दिल से भी बहुत हृदय से आपको स्वागत भी करते हैं। इससे हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे उनको कैसे हम गाइड के रूप में उनको हम हेल्प कर सकते हैं, इसके रिसर्च सुपरवाइजर्स की जरूरत है। तो उसके लिए हमारा जो प्रोसेस होगा क्या रहेगा, उसके लिए डिटेल्स जो है पांड्यामणि भाई जी हम सबको देंगे, बताएंगे। तो अभी हम मधुरवाणी ग्रुप से निवेदन करते हैं कि आए हम सबके बीच स्वागत गीत गाएंगे ना उस अभी जय कुमार भाई जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम मधुरवाणी ग्रुप को आमंत्रित करें। ओम शांति। ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, हम सर्व का प्रिय प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। हम हर एक जब से ज्ञान लिया है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट से हम अपने आप को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की लक्ष्य से इस आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं। परंतु साथ साथ स्वयं की परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सेवा करने के लिए हम सबको बाबा ने जिम्मेदारी दिया है। तो इसी के कारण हम सब दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। अभी इस केयर की प्रोग्राम से, क्योंकि बाबा की सेवा कई विंग से द्वारा कई तरह जीवन को परिवर्तन करने के लिए
जीवन को मूल्यवान जीवन बनाने के लिए हम हर एक दिन से कई तरह सेवा कर रहे हैं, आगे हम करते रहेंगे। अभी हम सभी मिलकर के इस कैर प्रोग्राम द्वारा भी बाबा का नाम रोशन करने के लिए, बाबा का रोशन करने के लिए, बाबा का दिव्य गुणों का सुगंध फैलाने के लिए हम आगे अच्छी तरह से विश्व का पिता का नाम रोशन करने के लिए ये PhD प्रोग्राम और भी अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामना से एक प्रोग्राम आरंभ हुआ है। अभी प्रातः जी 2-3 मिनट में 5 मिनट में आ जाएंगे। कोई गेस्ट खास प्रातः जी को मिलने के लिए आया, उनका थोड़ा लेट आना हुआ, इसी कारण भाई जी को आने का लेट हो रहा है। तो हम सब प्रातः मृत्युंजन भाई जी आ गया। स्वागत है, स्वागत है। शांति। अभी श्री कविन जी से निवेदन करते हैं, वेलकम, स्वागत भाषण हम सबके सम्मुख रखेंगे। श्री कविन जी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, क्या आप सभी मीठे दुलारे बच्चे बाबा की नैनों के नूर हैं। सभी आपके सबके चेहरे पे जो नूर छलकता है, उसी से पता चलता है, दिखाई देता है कि एक एक के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। और जो भी यहाँ सामने बैठे हैं, बाबा के बहुत जिम्मेदार बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल, और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सभी ने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए जिस एजुकेशन की जरूरत है वो तो परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो ही रही है, परंतु बाबा नए नए तरीके और हम सब बच्चों को सुझाते रहते हैं। PhD का प्रोग्राम जो बहुत समय से पेंडिंग था, बहुत बच्चों की भी अभिलाषा थी कि PhD हम करें, और आप सब ने मिलकर के आप सबके संकल्प जो है पूरे होने को आए हैं, और आप सब यहाँ पर आमंत्रित होकर के यहाँ पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी करके ये बहुत श्रेष्ठ प्रयास है हमारे पांडेमणि भाई जी का, जो वो लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, इधर सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए है। हमारे मृत्युंजय भाई जी भी जो हमेशा हर कार्य में सहयोग देते हैं, हामी भर के हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। हर प्रोजेक्ट में भाई साहब सख्ती से हम आगे बढ़ते हैं। बाबा तो हमेशा हम सबके साथ रहता ही है, बच्चे जो भी कार्य करते हैं, बाबा सब साथ रह करके हमें आगे बढ़ाता रहता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मृत्युंजय भाई जी का। आपके संकल्पों से एजुकेशन में जो है अलग अलग दिशाओं में आगे हमें 7 समंदर पार होकर के भी ये कार्य आगे लेके जाना है। तो भारत से शुरू होकर कभी 7 समंदर पार पहुंचेगा। हमारी दीदी शिलू दीदी जी, जो कि सचमुच में देखा जाए तो एजुकेशन विंग की हमारी दीदी जो है, सरस्वती प्रकट में नहीं होती है, भावनी का गुप्त है, लेकिन दीदी जी की वाणी, दीदी जी का स्वरूप बिल्कुल साक्षात सरस्वती जैसा है। तो दीदी के मुख से, मुखारबिंद से जो भी
ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाता है कि दीदी ने बोल दिया तो बस हाँ है। तो ऐसे ही सरस्वती मूर्त हमारी शीनू दीदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमारी लीना बहन जो कि उड़ीसा से है लेकिन वैल्यू एजुकेशन की सेवाओं में बहुत अग्रसर होकर के अभी मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे जय कुमार भाई जी भी, उनकी पाटेमणि भाई जी के राइट हैंड है और हर कार्य में सहयोगी बन के सदा चलते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ जो हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर वी सुरेश जी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ योगा सेंटर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भ्राता जी। डॉक्टर एम सुरेश कुमार, एचओडी साइकोलॉजी फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज मदुरई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर बी सुरेश कुमार, एचओडी मैनेजमेंट ऑफ तंजावुर, बहुत बहुत स्वागत। एंड डॉक्टर एस वालमुरुगन, एडवोकेट हाई कोर्ट चेन्नई। आप सभी का सहयोग साथ रहेगा तो ये कार्यक्रम बहुत आगे जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स सेविका बहन जी का। अभी हम निवेदन करते हैं मधुर वाणी ग्रुप को अपना स्वागत गीत हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय इसमें हमारे सतीश भाई जी और रमेश भाई जी को हम निवेदन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शिक्षा समाज को संस्कारवान बनाती है। शिक्षा बिना हर प्रगति अधूरी है। और यहाँ परम शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो सारी शिक्षा सृष्टि को परिवर्तन करने की है, संस्कारों की परिवर्तन करने की, दृष्टि के परिवर्तन करने की है। इस विशेष सत्र में आप सब केयर वाले आए हैं, केयर करने के लिए आए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परम शिक्षक के यहाँ आप शिक्षक आए हैं। परम शिक्षक के यहाँ आप शिक्षक आए हैं। शिक्षा में हो नई दिशा संकल्प मन में लाए हैं। परम शिक्षक के यहाँ शिक्षा जो शिक्षित करे, संस्कारवान बनाए जो।
सर्व का कल्याणकारी अध्यात्म शिक्षा सिखाए हो, अध्यात्म शिक्षा सिखाए हो। प्रोफेसर साहब सीखने अनुसंधान करने आए हैं, शिक्षा में हो नई दिशा संकल्प मन में लाए हैं, परम शिक्षक के यहाँ। शिक्षा समझो सफल जो आचरण कर दे विमल, स्वयं की पहचान दे, जीवन खिलाए जो कमल, जीवन खिलाए जो कमल। देखिए वो शिक्षा क्या जीवन से ये दिखलाए है, शिक्षा में हो नई दिशा संकल्प मन में लाए हैं, परम शिक्षक के यहाँ। ऐसी शिक्षा ऐसे शिक्षक ऐसा शिक्षालय कहाँ, विश्व को जो दे बदल वो विश्वविद्यालय यहाँ, विश्वविद्यालय यहाँ। अरावली आबू शिखर सम्मान में शीश नवाए हैं, शिक्षा में हो नई दिशा संकल्प मन में लाए हैं, परम शिक्षक के यहाँ। आप शिक्षक आए हैं, परम शिक्षक के यहाँ। आप शिक्षक आए हैं, शिक्षा में हो नई दिशा संकल्प मन में लाए हैं, परम शिक्षक के यहाँ। दुनिया वालों को सम्मान करते, बगल में रहने वाले साथ में रहने के लिए भूल जाते। मधुबनी गुरु के लिए तो एक अक्षर मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि इन लोगों से मुझे डर लगता है। पता क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को ये होमवर्क देने वाले, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने खुद कहा ना, तो गीत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो इसलिए मुझे डर लगता है और कुछ। थैंक यू।
ये डर लगता नहीं है कुछ हो गया, इसको प्रैक्टिस करने के लिए वेस्ट ब्रेड होकर के कैसे मैं कहूँ, वरन तो फिर भी वो विदेशी उसका विमान नहीं था पोस्ट एंड पावर पोजीशन के लिए, but he appreciated and acknowledged and he tried to implement it in his own profession. बहुत बहुत थैंक्स मधुर वाणी ग्रुप सतीश भैया रमेश भाई जी का। अभी हम निवेदन करते हैं पांड्या मणि भाई जी को, जो हम सभी जानते हैं डायरेक्टर ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के हैं। आप अभी हम सबको ये रिसर्च प्रोग्राम क्या है और केयर भ्राता पांड्या मणि भाई जी। Om Shanti, respected brothers and sisters on the dais and off the dais. I am very happy to meet you all because today is a memorable day in the history of Brahma Kumaris. Why I am saying this is, though Brahma Kumaris are doing this service for the last more than 86 years, today is the beginning. It is a new beginning. You might have heard in the song also, Nai Disha. They are thinking the new direction also. Since our guests are not able to understand in Hindi, I will do it in English. You are all well versed in both the languages, not only in languages, in understanding the depth of the point also. CARE means Center for Academic Research. The acronym we have made it as a CARE, but it is a Center for Academic Research. It is a unit of education wing RER. It is a branch. We cannot say branch because branch means it will be separated from it. It is a unit of education wing. And this will be run by two levels. One is the advisory committee, another is the executive committee. And I am very proud to say that you all, the professors who are going to get the professorship from the joint program, become the members of EC committee. Arito Bajai. Very good. Thank you. So, because what Shivika Ben also already told, when we have done so many master degrees, so many people are enthusiastic or interested to complete the research work. For any success of the organization, two things are required, very much what I understand. One is the training. Unless there is training, there will not be any development. Another is the research. Unless we do the research, we will not able to substantiate our own principles and practices. See, so many meditation researches have done, but not in Raj Yoga meditation. One interesting I want to share is, some days back, Dr. Suresh Kumar was addressing one webinar session. He told there is one organization in the world who is having this psychotherapy. For the entire world they are doing, so many years they are doing it. Do you know which institute? He asked me whether Pandimani knows. I told I don't know. He told Brahma Kumaris. Because he told only the lacuna is they have not documented anything. Whereas psychotherapy started only in 1982. They are telling someone is the father of the psychotherapy. Whereas Brahma Kumaris are already doing that for the last so many years. Here, the documentation is much more important. Therefore, now the time has come. Because Baba ko prataksha karna hai. We have to glorify Baba through the knowledge. When we reach the higher education, then only if you do so many researches from the so many parts of the world, then it is publicized. Then only people's eyes will be open. Those who are in the higher levels, the educated level mass, their eyes will open only with the research papers. Because whenever they want, they are searching only on that. Here I have brought the great personality, Dr. Suresh Kumar, HOD of Psychology, Madurai, who has done so many research. He has developed so many psychology which will be very much useful for our studies. For example, self-esteem, positive thinking,
Like that also he has developed anger management for anger scale. Because getting a scale is very difficult in psychology. You all know better. Because the standardized tools are available in very less number, and it was more westernized, and it is not localized available. Therefore, we could not get the correct input from the observers also. Therefore, he is very much interested in doing that research. He has developed so many skills that we will discuss in our program, and it will be very useful for you. And one thing, Dr. V. Suresh was the former director of Yoga Center. From the since beginning, he has helped us to promote the value education program. He is my mentor, personal mentor. Whenever I start any program, I will discuss with him. I will get his suggestion, ideas, and valuable things. Then I can able to move. For this care also, he is the instrumental. He has told that unless you form one informal group, it will be very difficult. It is true. Because it is not a one-day affair or it is not for one-time affair. It is a continuous process. Till we have to glorify Baba, we have to do so much of research also. Therefore, this is the best opportunity. Today we are going to inaugurate this CAR, the unit of education wing, under the chairman of our Mrityunjay brother, and he is the same chairman of our unit also. He is a multi-specialty personality. You all know better. He can do wonderful things. The recent one, with a just 4 days gap, he has arranged a vice president program. Normally, it is humanly not possible. Even they may not accept it also. It's not humanly possible, but he made it possible because he is the selected soul from the God who is making impossible into possible. Therefore, this is a very good beginning. When a seed grows, it in silence only. When the tree falls, it is a huge noise. Noise for the destruction and silence is for the germination or the growth. We have started this program with a lot of silence. It's also a good thing. And before us, the Shelu is also there. They have told very rightly. Bhattada once told that in his Khandapar, Saraswati ka nivasa. So that is why we are very fortunate to have such an elected personalities. Okay, thank you very much because I am with you for the next 2 days. I will talk more. You are all laughing. Don't worry. I talk only. Okay, thank you. बहुत बहुत आदरणीय भ्राता पांड्यामणि भाई जी का। अभी हम इस जो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं क्या प्रोग्राम का एकेडमिक फॉर सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च का, तो इसके लिए हम शुभ उद्घाटन करेंगे। इसके लिए कैंडल लाइटिंग के लिए हम अभी निवेदन करते हैं मंचासीन सभी अतिथियों का कैंडल लाइटिंग का शुभारंभ करेंगे। कहते हैं चलना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर और पदार्थ से सूक्ष्म की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर। तो ये शुभारंभ है, एक दिव्य प्रज्वलन करके हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है, तो उसको आगे लेते हुए हम दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
अपने 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 संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कर कर दे। ओम शांति। अभी हम आदरणीय सिलो दीदी जी से वरदानों से अपनी झोली भरपूर करेंगे। आदरणीय सिलो दीदी जी हमारे एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। हम उनको बहुत अच्छा है। रमेश तिरुमूर्ति जी, प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। ओम शांति। ओम Respected मृत्युंजय भाई, पांड्यामणि भाई, जय कुमार भाई, लीना बहन, and all my dear brothers and sisters who have come especially for this, for the inauguration of this CARE program, Center for Academic Education, Research, Center for Academic Research, and they have given this a very Empowerment. and empowerment. Okay, research and empowerment. Of course, research and empowerment should always go together. So, welcome for that program. And as I came to know that all of you are already research scholars, you must have done a lot of research, and most of you are also PhD degree holders, and you have been specially invited to give training who will be doing PhD in various subjects. So a professor has a great responsibility now. He not only teaches, but he's also a living model, a role model for the students. And if that research professor is of a high standard in morality, also in other aspects, his students are also very highly honored for that. Yes, it's true.
I remember there was one research scholar who came to our Raj Yoga camp, and I asked him, in what subject you have done research and who was your professor? And he very proudly said, it's many years ago, he very proudly said that my professor was Sarvapalli Radhakrishnan. Yes, he was a great professor, no doubt. And how he became the president of India. But he was a very big scholar, and he had taught many students for PhD. So a professor is also a very important personality in one's life. We start off with school. A teacher is a role model for a student, for a child. Maybe a child is less time with the parents and more time with the teacher. But then later on, we do more and more research. We experience that how we are, having a higher and higher level in thinking, and gradually we feel that we have a very, very important role in the society. Because it is what we do research on that is based all our other research programs too. And when it is research in value education and spirituality, I'm sure there's nothing higher than that. And this is such a subject where there is no end. Just as Brother rightly said, this learning process goes on till the end. Even a professor is a student in some way, because in order to teach others, he has to be so well prepared for that. So he's also always studying, and there is no end to education. Somebody may say, yes, I have studied enough. But where spirituality is concerned, there is no end to that education anyway. Because it is not something external, it is more internal. And as we go more and more within, we realize that there is so much to explore. Just as there's so much to explore outside too. I remember Einstein, when he was asked that how much research have you done, because he got that wonderful equation E is equal to mc square, changing mass into energy. And he was asked, how much more research would you be doing? And you know what he replied? That I'm only at the shore of the ocean, and I have to explore more and more. So there is no end to research. So we're all researchers, we're all explorers, and the more we go within, the more we realize that how little we know. We call Shiv Baba as the ocean of knowledge. So ocean is endless. And he says, I'm the seed of this kalpa tree. And you children become master seeds. I give you all the knowledge which I have to you. But still, we realize there is so much more to know. There is no end. So learning is a continuous process. And
Baba has also taught us that it is not just learning, but it is also teaching. In learning, you are only with yourself, but in teaching, you are with others too. And in teaching, you are learning too. So when we teach ourselves too. And we realize there is so much more to learn. It is like journeying an ocean, and that ocean is endless. So this is what you all have come for, to prepare yourselves for this purpose, to teach others and not make them just educated. It's not just the 3 hours, but it is much more than that. Because it is said that values cannot be taught, but they are caught. So they are caught by the students on how much we are and what we are. They learn accordingly. It is not just becoming bookworms. Somebody can just become a bookworm, learn everything by heart and so on. But it's not like that, because it's not just the brain which we are using, it's also a heart. And something which comes out from the heart, it goes deep inside. What comes out from the brain, maybe it can come out again. And this was also a very beautiful blessing which Baba gave me. Baba told me, Abeg Bapdada, that you speak from the heart. Some speak from the head, but you speak from the heart. And therefore, what you speak affects others' hearts. This was a beautiful blessing Baba gave me. And as they have been saying about Saraswati, it was also a wonderful blessing for me. I had just returned from Hyderabad with some executive officers of Nagarjuna Fertilizers. I had gone there for teaching them meditation in Hyderabad. And they came to Mount Abu for our program in Mount Abu. And we were meeting Avyet Bapdada. So I was translating them because they didn't know Hindi. So after the conversation was over, I just went, probably with no other thought. I just went for taking Toli Prasad. And Baba caught hold of my hand with the Toli in my hand. And he gave this blessing that Saraswati, the goddess of knowledge, is on your tongue. That's what Baba gave me. I was surprised. I didn't expect such a blessing. I expected something else, not this. But then after that, my mind started working a lot. I said, if Baba has given me such a blessing, surely there is some or a lot of importance in that. But for that, I have to be prepared. Maybe Baba wants me to do something greater than what I'm still doing. Something greater, that is why he has given this blessing. And what greater than this I have to do, I don't know. And then I thought, if Saraswati is on my tongue, then this mouth, these lips, should not utter anything which is not Gyan. Only Gyan, knowledge, should come from this mouth and nothing else. Because we talk so many things, so many things we talk. Unwanted words,
sometimes even evil words, bad words, negative words. Positive is sometimes quite rare. But then I made a promise that from now onwards, from these lips, it will be just God's knowledge and nothing else. Yes, that was a big promise I made to myself. And then I was waiting for what God wants me to do more, because He gave such a big title. And very soon after that, television program started for the Brahma Kumaris. It was in the year 93 when, uh, private channels began. Huh? No, before that was ZTV. So before that, it was just Doordarshan, no DD. There were no private channels, and Doordarshan never took up programs because they would say that ours is a government organization, so we cannot take any other private things. Only government things we put. But then when private channels began, and ZTV was the first private channel, and Brahmakumaris were invited, and we have our senior brother who is the chairperson of media wing, Brother Karuna. So he was given this program, this invitation, and he went to Dadi Prakash Mani, our chief of the Brahma Kumaris, and I in Madhuban in Mount Abu. So Dadi called me and said, "Can you go and give lectures on TV?" Before that, it was something, uh, which I could not even imagine because there were no such studios or anything in Mount Abu in our organization, nothing. Yes, before that, I had been to Bombay for recording a meditation commentary. That was only audio. I had been to Mumbai because we didn't have our own studios. Now we have so many, in Shanti 1 too. So I went to Mumbai for recording for meditation. And the first audio cassette at that time was produced. But then when I was invited for video or for recording for television, it was something very big for me, I felt. And I went there and I didn't know what I would say. But then the director of that special program, which was spiritual, because in 92, Babri Masjid was demolished. And there was a big chaos in the country after 92. It was 92. Big chaos in the country, Hindu Muslim rights. So the lady director of the spiritual program, she said that I want you to speak on such a subject so that peace comes in India. Peace comes in India. You have to speak on that because people should live together because that's what real learning is. It's not learning only to know or to do, but learning to be and learning to live together. So many religions, caste, creed, sex, cults in India, and how they should live together. You have to speak on that. And she told me 5 things which you should not speak on. I said, what are those 5 things? And she said, first of all, don't praise your institution. Don't praise any particular god. Don't praise Bharat because this will go to 60 countries, which was satellite program. So don't praise your institution. Don't praise your founder, your guru, whatever that. But then, so don't praise that. Don't praise any religion. Don't praise any country.